Community is group of species, plants and animals living together in an area at a time with mutual adjustment and tolerance in a natural area at a time. It is known as community. Now comes characteristics of community. Species diversity. One community has many species of plants and animals. This is known as species diversity. Now comes dominance. The species which is present in maximum number is known as dominant species. Now comes structure and distribution pattern. Trophic structure. Trophic level is position in food web like producer or primary producer, secondary producer or consumer, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer or top consumer. What is the trophic level in food web? Autotrophs, these are primary producers. Producers provide energy through photosynthesis or chemosynthesis. Plants are producers. The next level is herbivores. Primary consumers are secondary consumers, tertiary consumers, top consumer, apex predator. Top consumer is also known as apex predator. These are all community dynamics. The species which utilize same resources, they are closely related species and are same guild. Influential species, the species which is present in maximum number is influential species. Keystone species, top predator is keystone species. Removal of keystone species cause trophic top-down cascade. Now comes ecological succession, causes of succession. Initial cause of succession is climatic or biotic. Continuing cause, successive waves of changes, migration, aggregation, competition. These are all causes of succession. Stabilizing, climate is the chief cause of stabilization. Things are important, 4 things are important, that is change in plants and animals, increase in species diversity, increase in organic matter, biomass, energy flow, decrease in net production or annual yield. Now comes types of succession. Primary succession starts from primitive substratum. No plants or animals are there. First organism to establish is known as pioneer species. Secondary succession. External factors, change in climate and biotic intervention, fire, etc. cause existing community to disappear. Substratum is built. Secondary succession is rapid, very rapid. Autogenic succession, when community modifies its environment, causing replacement by new community. Now comes allogenic succession. Replacement of community by external condition is known as allogenic succession, not by existing organisms. Autotrophic succession, dominance of autotrophic organisms, green plants, in organic environment, energy flow is maintained indefinitely. Increase in organic matter content supported by energy flow. Heterotrophic succession, early dominance of heterotrophs, bacteria, actinomycetes, fungus, animals, begins in organic environment and decline in energy content. Hydrosphere or hydrat start where water is plenty, example pond, stream, lake, bog or swamp. Mezarch, adequate moisture is present. Xerarch, moisture in minimum amount, e.g. rock and dry desert. Xerarch is when moisture is present in minimum amount. Moisture सबसे कम amount में होता है जैसे कि rock and dry desert. Lithosphere, initiate on rock. Semosphere is succession on sand. Halosphere is succession in saline water or soil.
Now comes general process of succession. Number 1, nudation, development of bare area due to landslide, erosion, deposition or catastrophic changes. Topographic soil erosion by gravity, water or wind. Existing community disappear. Deposition of sand, landslide, volcanic activity, etc. Next is climatic like glaciers, dry period, hail, storm, frost, fire, destroy the community. ये सब storm, frost, fire ये सब community को destroy कर देते हैं. Biotic, anthropogenic means man-made, destroy the forest and grassland for industries, agriculture, house, etc. Epidemic and pandemic due to virus and fungus. Anthropogenic causes are जैसे कि मैन मेड कॉजेज हैं वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना, ग्रासलैंड को डिस्ट्रॉय करना, उसकी जगह इंडस्ट्रीज लगाना, एग्रीकल्चरल फील्ड्स डेवलप करना, हाउस बनाना और इसके कारण एपिडेमिक, पैंडेमिक एंड ड्यू टू वायरस एंड फंगस दे स्प्रेड. नाउ कम्स इन्वेजन, सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्पीशीज इन अ बेयर एरिया. इन्वेजन क्या है? किसी भी बेयर एरिया में किसी बाहरी स्पीशीज का सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाना. माइग्रेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, स्पोर्स and reach the some species reach the bare area, migration with the help of air, water, etc. Now comes establishment, successful establishment of new area. Plants migrate, seeds propagules germinate, seedlings grow, they become adult, they reproduce and they establish in the new environment. Some disappear, some reproduce in harsh condition. Individuals of a species establish in an area. कोई नई स्पीशीज जो है वो एरिया में सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो जाती है, सीड्स जर्मिनेट होते हैं, द प्लांट विल बिकम अडल्ट, प्लांट अडल्ट बनता है, रिप्रोड्यूस करता है, कुछ डिसअपियर हो जाते हैं और कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं हार्श कंडीशंस में, एंड द इंडिविजुअल्स ऑफ द स्पीशीज एस्टेब्लिश इन द एरिया. अब नए इंडिविजुअल्स हैं वो उस एरिया में एस्टेब्लिश हो जाते हैं. नाउ कम्स एग्रीगेशन, establishment, reproduction, individuals increase in number, come close. This process is known as aggregation. Animals जो हैं वो grow करते हैं, adult होते हैं, reproduce करते हैं, establish होते हैं, they reproduce and they increase in number, come close. This process is known as aggregation. इकट्ठा होना aggregation कहलाता है. Competition and co-action. After aggregation, competition starts. Aggregation होने के बाद species में competition होता है, inter as well as intraspecific. ये competition interspecific भी हो सकता है और intraspecific भी हो सकता है. It can be for space and nutrition. Space के लिए भी हो सकता है और nutrition के लिए भी हो सकता है. Individuals of a species affect others' life. किसी species के individuals दूसरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. दिस इज नोन एज को-एक्शन. स्पीशीज इफ अनेबल टू कम्पीट इज डिस्कार्डेड. वो स्पीशीज जो कम्पीट करने में अनेबल होती है उसे डिस्कार्ड कर दिया जाता है. विच विदस्टैंड कॉम्पिटिशन, रिप्रोड्यूस कैपेसिटी, वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड आर ऑफ मच हेल्प. जो कि कॉम्पिटिशन को विदस्टैंड करती है, उसकी रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है और वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड डेवलप होता है. रिएक्शन, मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन इट. मॉडिफिकेशन होता है एनवायरनमेंट का. कैसे? इन्फ्लुएंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन इट. जो भी ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट का मॉडिफिकेशन भी करते हैं. सीयर, द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी दैट रिप्लेस वन अनदर इज नोन एज सीयर. सीरियल कम्युनिटी, serial stages of development, this is known as serial community. Serial community, serial stages of development stages. Pioneer have low nutrient requirement, more dynamic and able to take minerals in more complex form. जो pioneer species है, जो first species है, उसका low nutrient requirement होता है, वो more dynamic होती है
and able to take minerals in more complex environment. Stabilization. There occurs a stage in the process when final terminal committee becomes stabilized for a long time and maintain equilibrium with climate. This is known as climax or known as climax stage. जो स्पीशीज एस्टेब्लिश हो जाती है और बहुत लंबे टाइम के लिए स्टेबलाइज हो जाती है वो क्लाइमेट से इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है और ये कहलाता है क्लाइमेक्स और क्लाइमेक्स स्टेज. Pioneer community, rooted submerged stage, floating stage, reed swamp stage, sedge meadow stage, woodland stage and final is forest stage. कोई भी जगह एक सबसे पहली कम्युनिटी डेवलप होती है, उसके बाद रूटेड और सबमर्ज स्टेज आती है, उसके बाद फ्लोटिंग स्टेज आती है, फ्लोटिंग प्लांट्स डेवलप होते हैं पॉन्ड में या फिर लेक में, उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आती है, नेक्स्ट सेज मेडो स्टेज आती है, वुडलैंड स्टेज आती है और लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज आती है. जनरल प्रोसेस ऑफ सक्सेशन इन हाइड्रोस्फीयर, पायोनियर स्पीशीज, serial and complex communities develop. According to Gleason in 1929, retrogressive succession starts and biotic influence is there on the process due to destructive effects. Forest may change shrubby or grassland community. This is known as retrogressive succession. जो फॉरेस्ट है वो पहले श्रब्स में और ग्रासलैंड कम्युनिटी में बदलते हैं, ये रिट्रोग्रेसिव सक्सेशन कहलाता है. Deflected succession, change in local conditions, soil characters or microclimate, the process of succession becomes deflected in different directions. Then climax communities are different. Local conditions में changes आते हैं, soil character और microclimate में changes आते हैं. Process of succession becomes deflected in different direction and then climax community are different. इसके कारण climax community जो है वो चेंज हो जाती है. इन इंडिया ड्यू टू मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, टेम्परेरी पॉन्ड, इट इज कॉमन टू ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी इन डिफरेंट सीजन ऑफ द ईयर. अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट जूजियन इन 1921, सीजनल सक्सेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट. हाइड्रोस्फीयर studied in ponds, pools and lakes. Hydrosphere, pond, first of all phytoplanktons develop, these are pioneer plant community. Terminate in forest, this is climax community. Phytoplankton stage, soil reduced pH 5, rooted submerged stage, hydrilla. Then comes rooted floating stage, example is nymphia. Reed swamp stage, example is typha. Sedge meadow stage, cyperaceae is example. Woodland stage, Salix cornus is example. Now comes last climax stage, that is forest stage. Elmus, Acer are the examples. Now comes lithosphere or xerosphere, starts on rock. Xerosphere originating on bare rock surface. Lichen stage, foliose lichen stage, moss stage, herb stage, aristida is the example, shrub stage, rus phytocarpus is the example and last is forest stage. सबसे पहले lichen stage आती है, उसके बाद foliose lichen stage आती है, then comes moss stage, herb stage, aristida, shrub stage, rus phytocarpus, forest stage is the climax stage. Climax concept. Climax concept क्या है? The final terminal community which establishes is known as climax stage and this was given by Clements in 1916. Clements ने 1960 में ये concept दिया था. Unity concept, climax is unit. Life or growth form indicate climate. Stability, climax is stable. Climax जो है वो stable होता है. Now comes origin of phylogenetic relations. Monoclimax theory, according to F.F. Clements, climate is important in stabilization of community.
All land surfaces eventually tend to be occupied by a single community, which is climax. मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि क्लीमेंस ने दी थी, क्लाइमेक्स जो है वो इंपॉर्टेंट होता है. सरफेस, लैंड सरफेस इवेंचुअली जो है वो ऑक्यूपाइड हो जाता है एक कम्युनिटी के द्वारा, जिसे क्लाइमेक्स कहते हैं. पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी टेंसले ने दी थी 1935 ने. क्लाइमेक्स इज कंट्रोल्ड बाय मैनी फैक्टर्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, क्लाइमेक्स इज कंट्रोल्ड बाय मैनी फैक्टर्स. So this concept is known as polyclimax concept. Later they developed into climatic climax. ये बाद में climatic climax में develop हो जाते हैं. Now comes subclimax. Community which stabilized due to microclimate is known as subclimax. Now comes disclimax. Disturbed climax is known as disclimax. Community which became stabilized due to disturbance by man or other biotic factor is known as disclimax. Prevent establishment of climatic climax in the area. ये climatic climax को establish होने से रोकती है. At the same place under similar climatic conditions at a small distance due to difference in water soil characters. वाटर और सॉइल कैरेक्टर्स की डिफरेंस के कारण ये होता है. देयर मे बी डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटीज, और वाटर और सॉइल कैरेक्टर्स के डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट क्लाइमेक्स कम्युनिटीज डेवलप हो सकती हैं. प्री क्लाइमेक्स कम्युनिटी विथ लाइफ लोअर देन क्लाइमेक्स. प्री क्लाइमेक्स क्या है? वो कम्युनिटी जो क्लाइमेक्स से लोअर होती है वो प्री क्लाइमेक्स कहलाती है. पोस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी with life higher than climax is known as post climax. Community जो climax से higher होती है वो post climax कहलाती है. It develops in moist and cold habitat. Post climax जो है वो moist और cold habitat में ज्यादा develop होता है. More terms coined by Clements are co-climax, super climax, quasi climax, paraclimax, st climax, con climax, पेनी क्लाइमैक्स, मेटा क्लाइमैक्स, स्यूडो क्लाइमैक्स एक्सेट्रा. ये जो साइंटिस्ट ने और दूसरी टर्म्स दी थी क्लाइमैक्स से रिलेटेड. एडेफिक क्लाइमैक्स, बायोटिक क्लाइमैक्स, एडेफिक रिलेटेड टू सॉइल, बायोटिक क्लाइमैक्स रिलेटेड टू बायोटिक फैक्टर्स, एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स ड्यू टू ह्यूमन कॉजेज, ड्यू टू मैन, ग्रेजिंग क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स फॉर्म ड्यू टू ग्रेजिंग इफेक्ट्स, zootic climax, climax formed due to effects of animals, topographic climax, different topography of mountains and hills forms different climate, fire climax, climax formed due to fire. More terms are paraclimax, anticlimax, metaclimax, pseudoclimax. Pseudoclimax is false climax. Tensley in 1935 coined edaphic climax, biotic climax, grazing climax, zootic climax, etc. Climax pattern hypothesis. Climax pattern hypothesis is Whittaker in 1953 rejected the classification approach. Community gradient analysis. Community developing at a particular place are in accordance with all factors of environment. Big community changes according to soil characters, slope, and other abiotic factors like temperature, water availability, light. They all cause and affect the community development. This is all about community. Thank you.